Good morning, student. Welcome you. In previous lecture, you study about remuneration of a person, centralization of and decentralization. Okay. Now, next point 9, principle of scalar chain. Principle of scalar chain. This principle given by Fayles to management in an organization. Okay, now ninth number principle, it is ninth principle of scalar chain. So scalar chain means line of authority. Okay, it means line of authority or chain of superior from highest to lowest rank. Okay, it is a chain, means one by one, from highest to lower, highest authority to lower, that is subordinate. Okay, from, for example, we take example. This is a higher post A, then B, C, D, B, C, D. Okay. Indian government also work like this principle of on the basis of scalar chain. Central government, state government, district, tehsil, and panchayat. Okay, same procedure Indian government work as in a scalar form, in a principle on the basis of principle of scalar chain. So it is a scalar chain means the authority of or chain superior from highest to lower rank. Understand? Means highest से lowest की ओर कि सबसे टॉप अथॉरिटी जो है डायरेक्टर, फिर मैनेजर, फिर उसके सबऑर्डिनेट, एम्प्लॉय, इंचार्ज, then employees. So Fayol insists, either Fayol suggests that this chain must be followed strictly in the organization, or this chain must be followed strictly to get desired result. If we do not follow, then we will unable to get our result, our organization goal. Okay, so we must be strictly follow this rules and regulation. It means this chain, scalar chain, must be followed by our organization. Every information must pass through every key of this chain. No skipping any one key should be allowed. Okay, every information. Suppose information given by A, so this information should not be skipped direct A to D. Suppose this is information for the D, so it should not be skipped B and C. Okay, one by one. This is the information direct give to B. B provide C, and C provide this information to D. Okay, this is the principle of a scalar chain. ओके, चाहे ये सूचना इंफॉर्मेशन डी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि ए डायरेक्ट डी को इंफॉर्मेशन करेगा, बी और सी को पता नहीं है. ओके, सो इस प्रिंसिपल का जो मेन मोटिव है कि जो इंफॉर्मेशन वो चेन टू चेन, स्टेप टू स्टेप जाना चाहिए. ओके, ए यदि कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो बी को देगा, बी सी को देगा और सी डी को देगा. ये मेन प्रिंसिपल स्केलर को चेन का यही होता है कि जो है इंफॉर्मेशन वो वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप जाना चाहिए. इट शुड नॉट बी स्किप, leave anyone. Okay, for an example, once again example we will see according to book. According to scalar chain principle, E want to contact O. E want to contact O, so he has to move through E, D, C, B, A, L, M, N, O and then O. Okay, यदि यहाँ पे D है और ये E है, ये यदि O से कांटेक्ट करना चाहता है, ओके ओके, A, B, C, D, E. If E want to contact with the O, so E cannot direct contact with O. Okay, he should be go step by step. E will be contact to D, then C, B, then A, L, M, N, O. Information either he contact through one by one. Okay, if this chain is broken, then there are chance of communication gap in the organization. Okay, if the chain is broken, direct suppose E contact to O, so there is a communication gap. But sometime follow scalar chain become a long process, and if some important information has to be processed, it get delay. So in case emergency and urgent information, but sometime organization can
skip another person in some time, not always. Okay, if we provide some information, then one by one, then it will take a lot of time. So sometime is direct A contact to O, either E. Understand? In some time, in some cases, to save time, then he can direct contact to A either E either O in some cases, but almost cases principle of scalar chain followed by follow in this organization. Fayles permitted a shortcut in the chain which is called Gangplank. Okay, जो Fayles इसको एक permit करते हैं. Okay, this is called Gangplank. What is the Gangplank? Gangplank. Okay, Gangplank permits direct communication between the employee working in different position without following the scalar chain. Okay, so this plan permitted direct communication from one person to another person between employees working in different option without following the scalar chain. So this is known as a Gangplank. Okay, कभी कभी डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकता है, ए ई से करता है, ई एन से, एम ओ से कर सकता है. ठीक, तो इस तरह का जो प्रोसीजर होगा गैंगप्लैंक के नाम से जाना जाएगा. बट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मस्ट बी फॉलोड इन ऑलमोस्ट throughout the period of a organization. Okay, it may be in some cases Gangplank can be followed. Okay, for an example, if E want to pass some urgent information to O, okay, यदि E O को कुछ information provide करना चाहता है to, then instead of the following route of scalar chain, he can direct communication with the. Okay, second example, if E want to contact O, pass some urgent information to O, यदि E O को कुछ information provide करना चाहता है, then instead of following the long route of the scalar chain, he can directly communication with the O by constructing a gangplank. Generally, worker cannot direct communication with the CEO. Okay, generally employee direct cannot contact with the CEO. Suppose CEO, this is a CEO, with the CEO, but through Gangplank it is possible. But through Gangplank it is possible. Okay. Now, positive effect of this principle. Positive effect of this principle. First, systematic flow of information. Okay, what is the systematic flow of information? One by one, each and every member of this organization know about the information given by CEO. No communication gap between in the organization. There is no communication. There is no communication between in the organization between the employees in charge of departments and CEO. Some consequence of violation of this principle. Suppose violation of this principle, यदि हम इस principle को तोड़ते हैं तो उसमें कुछ negative रिजल्ट आ सकते हैं. हम जैसा कि पहले से ही देखते आ रहे हैं जितने भी हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं, तो यदि हम कोई रूल्स तोड़ेंगे तो सुबह के बाद उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा. ओके, देयर में भी कम्युनिकेशन गैप. ओके, सपोज आपने डायरेक्ट गैंगप्लैंक के थ्रू किसी और को इन्फॉर्मेशन दिया है और सपोज दूसरे व्यक्ति को भी जरूरत था, उसको नहीं मिला, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप रहेगा और क्लैशेस के चांसेस हो सकते हैं. एंड इट्स हैपन इन द एनी ऑर्गेनाइजेशन. होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये स्केलर प्रिंसिपल लागू नहीं होता, जिसके कारण कुछ मतभेद हो जाता है. ओके, नो क्लियरिटी इन द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन. नो क्लियरिटी नहीं होता है रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के पास रिलेशन में, तो कभी कभी ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है. फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक और देखा होगा, यदि आपने किसी बैंक से इंस्टीट्यूशंस लोन लिया है तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपका ड्यूज है जो इंस्टॉलमेंट इस तारीख को आ रहा है, यदि आपने पे कर दिया ठीक है, नहीं है तो पेमेंट करिए, नहीं कर दिया तो आप इसको डिनाइट करें. ओके, मीन्स उनका मोटिव होता है, स्केलर जो प्रिंसिपल होता है कि सबको इन्फॉर्म जरूर करें, चाहे आपने पे किया है नहीं किया.
Okay, so principle of this scalar quantity. First, sorry, scalar chain. Sorry, okay, not a quantity. Scalar chain is a first following line authority of hierarchy of manager from communication every information. Okay, hierarchy system. Okay, hierarchy system. आपने पढ़ा होगा ये पहला शब्द कहाँ पढ़ा है? ओके, सोशल साइंस में पढ़ा होगा हायरार्की सिस्टम. पहले अपने यहाँ जो किंग होता थे हायरार्की सिस्टम होता था. कोई किंग है, सम्राट है, तो उसका बेटा नेक्स्ट सक्सेसर होगा, फिर उसका बेटा होगा. ये हायरार्की सिस्टम. बट नाउ डेज देयर इज नो हायरार्की सिस्टम. ओके, आज डेमोक्रेसी है. इस बार आप यदि रूलर है तो अगली बार कोई और होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, report to your immediate boss only. Okay, report whatever happen in the organization. It may be any cases, any secret information, so it should be direct